All set. Hello and welcome everyone. We are back with Cricket360. We're all set for the pre-match analysis. The match is maybe just 10-12 minutes away. Obviously, you guys know the match is being played at Wanderers, which has obviously been a very good ground for Team India. Halaki, day one wasn't in our favor, if you remember. Now, before we kind of get started with our chat, obviously Sudhir is with me. What I wanted to share with all of you is, based on our sources, what we've gotten to know, because a lot of you had messaged us, and I saw a chat on Twitter about people being concerned about Siraj, because obviously he left the ground. Rahul Dravid also looked a bit worried as well, rightfully so. But from what we understand, the good news for Indian fans is Siraj should be bowling, and he seems to be kind of recovering, and he seems all pumped up, as we know Siraj to be. I think, in some of our from our sources, what we understand, he said, look, I'm not going to leave Team India alone. I'm going to give it all my best, which, if you remember Sachin Tendulkar's video, that's exactly what Siraj is all about, is whether it's ball one or that ball 6 of the 90th over at the fag end of a day, Siraj is all pumped up. Sudhirji, welcome to the show. What are your expectations from the match today? थैंक यू वेरी मच प्रांतिक. देखिए, पहली चीज तो मैं सिराज के विषय में कहूंगा, जैसा सचिन भाई ने कहा था, बिल्कुल वो एग्जैक्टली पर्सनालिटी ही वैसी है. मतलब कई बार थोड़ी सी सिमिलरिटी लगती है जब बोरिया भाई मुझे बोलते हैं कमेंट्री को लेके, खास तौर से कि सुबह और शाम को मुझ में भी कोई अंतर नहीं लगता उनको. उसी पावर के साथ वो चलती है कमेंट्री. वैसे ही सिराज की जो एक एटीट्यूड है स्पोर्ट्स को लेके, खेल को लेके, वो भी एग्जैक्टली वैसा ही है. चाहे पहली गेंद और आखिरी गेंद भी हो अगर दिन की, तो उनका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहता है. अगर भारतीय टीम की बात कर लें तो खैर ज्यादातर लोगों को जानकारी होगी अभी के वहां जो थंडरस्टॉर्म की हम बात कर रहे थे, बारिश की बात कर रहे थे, वहां हुई एज यूजुअल. और अच्छी खबर ये है कि ग्राउंड क्योंकि बहुत अच्छा है और जो वहां पे स्लोप है वो बहुत बढ़िया, तो उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है. तो मुझे उम्मीद है कि जो हल्की फुल्की भी, थोड़ी बहुत भी हवा में जो मॉइस्चर होगा, वो पहला 1 घंटा भारतीय जो गेंदबाज हैं उनको निश्चित रूप से फायदा उसका उठाना, क्योंकि गेंद अभी नई है, मतलब बहुत ज्यादा ओवर्स हुए नहीं है. तो अगर कल की तरह मैं कहूं कि बिल्कुल सही जगह अगर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने टप्पा रखा, लाइन और लेंथ अपनी बिल्कुल सही रखी, वही 3/4 या थोड़ा सा उससे पीछे शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, तो आज पहले 1 घंटे में भारतीय गेंदबाजों को एक बढ़िया सी करामात दिखानी पड़ी. और अगर उसमें वो कामयाब हो जाते हैं तो आप हो सकता है भारतीय टीम को दोबारा बल्लेबाजी करता देखें आज. Absolutely. And before we speak about the bowling, which will be very critical, let's quickly talk about KL Rahul. Yesterday we spoke about KL Rahul. Firstly, let me also welcome our guests, Ranjit, Sachin. Thank you for those comments and good wishes. We will come to those in a bit. But, we were talking about KL Rahul. Obviously, what a year it's been for him, from not being part of the squad, from going through that whole personal crisis after the TV show as well. He's made such a good, steady comeback across all formats. And today, Bakeda has become the stand-in captain for Rohit as well as for Kohli. Clearly, the future is set that KL Rahul and Bumrah seem to be the future leaders of the next generation. Let's quickly talk about, maybe get your views, and then we'll play a clipping about KL Rahul's journey. Sudhirji, any 1 or 2 thoughts about, what impresses you the most about KL Rahul? देखिए, पहली चीज तो ये है कि उनकी जो टेक्निक है मुझे वो बहुत इंप्रेसिव लगती है, और जिस तरीके से गियर बदलना वो जानते हैं, बहुत कम ऐसे बल्लेबाज देखने को मिलते हैं. और दाएं हाथ के बल्लेबाज जब कवर ड्राइव या कुछ ऐसे खास स्ट्रोक्स लगाते हैं जो अक्सर बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं लगते हैं, ये वो खिलाड़ी है कि बिल्कुल बहुत ही लेफ्टी बैट्समैन से भी ज्यादा ये खूबसूरत लगते हैं जब बिल्कुल, क्योंकि इनकी जो टेक्निक है वो बिल्कुल एक्यूरेट है. दूसरा, ये अपने आप को इन्होंने जिस तरीके से ढाला है विभिन्न परिस्थितियों में या विभिन्न फॉर्मेट्स में, वो काबिले तारीफ है. आप यहां पर देखिए कि विराट कोहली जैसे एक लेजेंड, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए ऑफ साइड पर गेंदों को लीव करने के लिए, लेकिन यहां पर केएल राहुल जैसा बल्लेबाज जो वाकई में धीरे धीरे अपने आप को एक लेजेंड की कैटेगरी में लेकर आ रहा है सिर्फ अपने प्रयासों से. उनकी एबिलिटी ज्यादातर हम देखते हैं कि खिलाड़ियों में होती है, लेकिन उस एबिलिटी का सही फायदा उठाना, सही अपने आप को अप्लाई करना, ये गिने चुने जो खिलाड़ी होते हैं उनके पास ये विधा होती है. और जो उसमें पारंगत हासिल कर ले वो फिर महान खिलाड़ी अपने आप बन जाता है, जिसकी राह पर मुझे लगता है केएल राहुल जो है वो अब निकल चुके हैं. Thank you. Let's quickly see that clipping of KL Rahul, what Boria had to say, and then we'll come back with some more insights.
person who has made 2021 his own, it has to be KL Rahul. Imagine the start of the year 2021. India was playing in Australia, fantastic test match in Sydney, incredible win at the Gabba. KL Rahul was actually tweeting about the wins, talking about the team, because he was not part of the red ball team. He was part of the white ball team for sure, but he was tweeting about these wins, saying how good they were. KL was not even the top 3 in terms of opening batsmen. Rohit obviously had cemented his place and was playing beautifully. Shubman had played a cracking knock in Sydney, and Mayank was India's third opener. KL Rahul was not part of the red ball schema. Thereafter, in England, when Shubman Gill was injured, the selectors turned towards KL Rahul, and thankfully so. So Chetan Sharma and your team deserves a hell lot of credit for going back to KL Rahul. And then in England, the transformation really started. What incredible batsmanship from both Rohit Sharma and KL Rahul. And all of a sudden, the opening problem that India had over the last several years was no longer an issue. Rohit and Rahul were playing outstandingly well, and that reflected in the results. KL Rahul had got newfound confidence, and that confidence continued in South Africa in that first test match in Centurion. Clearly he set it up for India. He and Mayank with that 100-run stand. Yes, there was Shami, there was Bumrah, there was a lot, but it was actually KL Rahul who set it up quite outstandingly well. Now, if I go back and celebrate KL Rahul, I have to take you back to the time of that controversy. I was very closely, following that, talking to him on a regular basis. And I can tell you that if you actually think about the mental health of KL Rahul at that point in time, he was in a horrible mental state. He was not even willing to meet anybody, constantly self-doubting, asking questions if I'm a good human being or not. I remember him telling me that when I go out on the streets, I keep thinking people staring at me and saying a lot of nasty things. Am I like that as a human being? He was ridden with self-doubt, and clearly he was very unhappy with himself, deeply traumatized as to what happened, multiple times had apologized in the public domain. So all said and done, clearly KL Rahul was going through a troubled period. When he got his opportunity back, look, everyone makes mistakes. You and I have made multiple mistakes in life. I remember him telling me, Dada, all I want to do is play cricket. All I want to do in that 22 yards, it's me, the ball and my bat. I do not want to do anything else. And I remember speaking to him and he said, I will come back like a phoenix. I still have that WhatsApp message actually. I will come back like a phoenix, you mark my words. At that point in time, I kept encouraging him. I remember speaking to him in an interview also in Calcutta when he was here. And at the back of my mind, I was like, maybe or can he? He has. And what a telling manner in which he has made this comeback. I think 2021 has been the year of the make of KL Rahul. Now the captain of the Indian team, captain in the absence of Rohit Sharma, also captain in the absence of Rohit Sharma in red ball, KL is finally realizing his potential. A lot will depend on KL Rahul, even in the third test match, not to forget this particular one. So in every sense, India now knows that they have someone who has started to peak and get to the top of his game. He always had quality. Look at his hundreds in different parts of the world. Finally, he has started to come good in the manner that all of India wanted him to. Fantastic. Fingers crossed, 2022 will be the year of KL Rahul.
Indeed, what a wonderful comeback, and we wish KL Rahul all the best. Here's a little trivia for him and for everyone that in the 6 test matches that India has played at Johannesburg, we've had 6 different captains, and 3 of them have gone on to score centuries. Sachin, Dravid, and Kohli. Whenever they've captained at Joburg, they've scored century. So KL, no pressure. Pehle innings mein hua nahi, but hopefully, if when India gets to bat soon, hopefully you will convert this into a ton, and like Dravid and Kohli, hopefully you will win. Now, like I said, talking about Joburg, we have our own correspondent here, Anand Vasuji, who's on the ground. We have some footage from him as well, just to give us a quick preview of, what the day holds. So if you can have that clipping, then Sudhirji would love to get your view on what can we expect today. All right, I think it's still there's some little technical glitch. We'll get to the video clipping very soon. But Sudhirji, let's talk about from a day's perspective. One thing that I saw that compared to 2018, the scorecards at the end of day one look very, very similar. Now, my question to you is, in that match, India had bowled South Africa out in the second innings for below 200, I believe 194. For us to repeat that, what is key? Who is going to make that difference today? Well, I think हमारे पास जो मोटे तौर पे हैं गेंदबाजी में अगर नजर आए तो जिनके विषय में हम लगातार बातचीत कर रहे थे, पहली चीज तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। उनमें से सबसे बड़ा नाम मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी जो है, उनकी गेंदबाजी एक बार फिर से आज डिसाइसिव साबित होगी। जैसे कल उन्होंने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की थी। उसके बाद आज मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर्स कब आए। तो डेफिनेटली ये दो एक खास भूमिका निभाएंगे। और सिराज, जैसे कि आपने अभी शुरुआत में बताया कि वो बिल्कुल फिट है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो डेफिनेटली सिराज भी आज एक अहम किरदार में दिखेंगे, क्योंकि उनकी जो बाहर जाती हुई गेंद है, खासतौर से लेट आउट स्विंग जो होती है, वो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती है। और दूसरा ये कि उनमें सबसे बड़ी जो एक खूबी है वो है उनकी कंसिस्टेंसी। तो वो अगर ये 3 तिकड़ी जो है वो बहुत बढ़िया काम करे आज शुरुआत के 1 घंटे में डेफिनेटली, और उसके बाद मुझे लगता है कि अगर आज 1 घंटे के बाद यहां पर केएल राहुल अश्विन का इस्तेमाल करें, एक एंड पे स्पिन और एक पे तेज गेंदबाजी, तो यहाँ का जो एक बाउंस है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल फायदा करेगा अश्विन का। आपको याद होगा कल जब 1 ओवर में आए थे उनके गेंदबाज महाराज, केशव महाराज, तो 1 ओवर में जिस तरह से उन्होंने फ्लाइटेड डिलीवरी भी की थी, हल्का सा टर्न देखने को मिला था जिसपे ड्राइव भी लगाया था अश्विन ने, और वो ड्राइव जो है वो लगातार 2 या 3 स्ट्रोक्स हमने देखे वो हवा में रहे। तो दैट मींस यहाँ पर स्पिनर भी थोड़ा बहुत नुकसान कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात जो होगी वो ये कि जो पिछले मैच में 1 अंक गंवाया था स्लो ओवर रेट का भारतीय टीम ने, उसमें भी थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर स्पिनर जो है वो ओवर रेट को तो सुधार देते ही हैं, जैसे कि अश्विन भी बहुत जल्दी जल्दी गेंदबाजी करते हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं क्रीज पर, तो यहाँ पर तो चांस लेना डेफिनेटली बनता है कि ऑफ स्पिनर को 1 या 2 ओवर, या अगर जैसे अश्विन है उन्होंने दिखाया पिछली बार भी, अगर उनको थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड स्पेल मिले तो वो किसी भी बैटिंग में रन थ्रू कर सकते हैं। ये उनकी काबिलियत है जिसका पूरा फायदा भारतीय कप्तान को उठाना चाहिए। No, I like you've always backed Ashwin, and you want not only for him to bowl more overs, but the field to be attacking. And maybe KL Rahul, he probably will want to set that attacking field, and that will be a very interesting, element of India's performance to see, the difference between Kohli using someone like Ashwin versus KL Rahul. Let's see how that goes. And again, in talking about trivia, I think one thing that Ashwin can seek inspiration is today is the day that the great Muralitharan, who's obviously the leading wicket taker in Test cricket, he had taken his career best 9 for 51 against Zimbabwe. In fact, if I remember correctly, had it not been for a drop catch and a close LBW call, he would have taken all 10, just the way Ajaz Patel and Kumble have done it in their life. So hopefully, Ashwin, there's some more inspiration. Not that you need that. He's obviously such a pumped up cricketer. It was great to hear his views about his batting as well, because I think I heard him say that he had gone into a bit of a shell beach me for a couple of years, trying to be technically very right. But he said, I had to kind of get back to my basics, to score, to make strokes, because in overseas conditions, sometimes you just need to go with the flow and make those strokes and make as many runs as we saw yesterday. Without his handy 40 plus runs, India could have been in a bigger spot of trouble. What is your take on, again, if I look at today from a South African perspective, would you agree with me that Dean Elgar is probably the biggest roadblock as far as resistance is concerned? Do you see any other batsman making a difference?
देखिए, डीन एल्गर एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया है। वो जिस तरह से पिछले मैच में भी खेले थे, उनकी टेक्निक मुझे बहुत ज्यादा साउंड लगती नहीं है, लेकिन कुछ गॉड गिफ्ट है कि वो क्रीज पर रुकते हैं और मतलब तमाम स्ट्रगल के बावजूद वो क्रीज पर खड़े रहते हैं। तो वेल, ये एक उनके पास गॉड की एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। उसके साथ साथ बमुआ जो है, मुझे लगता है कि वो एक की रहेंगे आज, और मार्को येंसन वो भी मुझे लगता है कि अच्छा किरदार निभाएंगे। जिस तरह की उनकी तकनीक है, एक लंबा कद है उनके पास 6.8, और तो उनकी रीच जिस तरीके से है, तो मुझे लगता है कि वो भी एक अहम किरदार आज डेफिनेटली दक्षिण अफ्रीका के लिए जब भी उनको मौका मिलेगा वो निकाल सकते हैं। वैसे अभी कुछ जो हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कुछ एक सचिन गहलोत जिनके विषय में आपने जिक्र किया था, उन्होंने एक बात कही थी और मैं उस पर कुछ टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा कि सर, एवरी प्लेयर वांट्स टू प्ले बट ड्यू टू their low performances they are dropped, and then after a few years they say that they were not given favorable matches. Well, मैं समझ गया हूं आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाल ही में कुछ खिलाड़ियों ने जो है रिटायरमेंट ली है, तो बिल्कुल देखिए, ये होता है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। अब ठीक है, आप बहुत बड़े लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपकी ढलान आई उस दौरान कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि आप इकलौते हैं, ऐसे ऐसे अगर प्लेयर्स की लाइन देखें तो बहुत लंबी लाइन है जहां पर ये सब हुआ है, और जिन प्लेयर्स के साथ ये सब हुआ है, चाहे आप युवराज की बात उठा के देख लीजिए, इवन धोनी की उठा के देख लीजिए, इंडिया के लेजेंडरी कैप्टन इकलौते ऐसे कैप्टन हैं जिनके पास 3 आईसीसी की ट्रॉफी हैं, जो मतलब किसी के पास भी नहीं है, लेकिन उनका फेयरवेल देख लीजिए आप। एक्सेप्ट सचिन, मैं कहता हूं शायद ही कोई खिलाड़ी ऐसा रहा होगा। आप सनी सर की बात उठा के देख लीजिए, उनको ऐसा कौन सा फेयरवेल मिला, कपिल पाजी को कौन सा फेवरेट मिला ऐसा। लेकिन ये है, ये गेम है, और इसी तरीके से अभी तक ऐसा ढर्रा चलता आ रहा है, तो दुर्भाग्य है, लेकिन स्टिल इट्स हैपनिंग। वेल, थैंक यू वेरी मच सचिन, आपने आगे बढ़कर हमसे ये सवाल किया और हमारे विचार जानने की कोशिश की। उसके बाद संजय राउत भी हैं। वेल, उन्होंने सिर्फ यू लिखा है, दैट आज उसका मतलब क्या मुझे समझ में नहीं आया, बट एनीवे थैंक यू वेरी मच आपके लिए भी संजय राउत जी। तो प्रांतिक, वैसे एक और इनको मैं जानकारी देना चाहूंगा जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, और हमने बहुत डिस्कस किया कि पुजारा या मिडिल ऑर्डर हमारा फ्लॉप कर रहा है। आपने बड़े अच्छे आंकड़े दिए थे उसके अंदर कि भाई 24, 26 और 27 की औसत के साथ कुछ ऐसा रहा है। और इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर का फ्लॉप शो है वो काफी कंट्रीज से मैं कहूंगा कि बेहतर है, लेकिन हाँ, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से कम है। सो वेल, ये एक की है 28 की औसत के साथ दक्षिण अफ्रीका, बावजूद इस बात के कि वो मैच हारे हैं, फिर भी उनका जो मिडिल ऑर्डर का जो एवरेज है वो 28 का है। इंग्लैंड का 37 का है, जबकि वेस्ट इंडीज जो है वो हमसे नीचे है, उनका 24 का है। और 3, 4, 5 जो सबसे बड़ी सरदर्द या परेशानी बने हुए हैं भारतीय टीम के लिए फिलहाल, मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन है, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे, उनकी औसत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर चेतेश्वर पुजारा की औसत देख लीजिए आप 19 मैचेस में, तो उनकी है 24.87, वहीं पर विराट कोहली की है 26.08, और अजिंक्य रहाणे इन तीनों में टॉप पर है एक शतक के साथ 27.19। तो अब वही है कि इनमें से आप किसको ड्रॉप करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। इस चीज को आप दरकरार नहीं कर सकते कि विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है तो साहब उनको चलने दीजिए। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे भी उतना ही बड़ा नाम है अगर हम वैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है मैनेजमेंट के लिए कि किसको आप ड्रॉप करें, किसको नहीं। True that, and as you said, perhaps they'll give everyone the rope for this whole series, and then Absolutely. the think tank will get together and decide again. I suppose we also have to look at horses for courses, depending kahan khel rahe hain, who else is injured. We'll have to take a call before we get to the match, which is just about begun. Also I think it's important that it's likely that it will be a low-scoring game, and yesterday Pant unfortunately dropped a catch. I'm hoping India, also remain alert. India's fielding over the years in the recent past has been good, but we've got to be very alert because, in a low-scoring game, one little bit of relief could lead to a quick-fire 50. But before we let you go and watch the match, here is the video, as I promised, from Anand Vasu. Hello and welcome to day 2 of the second test match at the Wanderers at this great cricket ground. It's been raining all morning. It rained quite a bit last night, but the good news is it's bright and sunny now, and this is a ground that drains effectively and tremendously fast, so there should be no delay in the start of play. India struggled after having chosen to bat on the first day, bowled out for only 202,
KL Rahul making the only half century of the innings, and Ashwin contributing vital runs at the lower half of the innings. But South Africa won't have it easy either. You could see that India's fast bowlers were hitting their right lines and lengths by the end of the day's play, zoning in pretty much on the top of off stump. If they can do some more of that early on and cause some damage, they can restrict South Africa for a score that could be close to 200. The average first innings score at the Wanderers historically is 316, so India will feel that they have far too few. But given this bowling attack, they will never lose hope. They will know that it's only a matter of time before they come back into the game. A good batting performance in the second innings, and this could be a single innings shootout for this Indian team. Remember, they're chasing history. A win here will seal the series, and they've never lost at the Wanderers. That's a proud record to keep, and this is a team that believes in fighting from every situation. The batting might have not gone as they wanted, but the bowlers will do everything they can to make up for that. Thank you, Anand Vasuji. You're absolutely right. It's the fighting spirit that counts. And as we have seen, Siraj is on the ground, as we had told you guys, and we broke the news here. And the Indian bowling attack, as what Sudhirji suggested, has to make the most of conditions in the first hour or so. The series is on the line, history is on the line. Any parting thoughts, Sudhirji? बस मैं यही कहूंगा कि भारतीय गेंदबाज जो डिसिप्लिन है उसके अंदर गेंदबाजी करें, सही क्षेत्र में अगर सही से टप्पे पड़ें तो वाकई में आज बहुत कुछ जो है इतिहास में अच्छा लिखा जा सकता है भारतीय क्रिकेट के परिप्रेक्ष्य में. All right, thank you so much. We'll see you once again at the end of day's play. Hopefully it should be a full day's game. Hopefully see you soon. And thank you once again to Thumbs Up and Yoda Lifeline Diagnostics for supporting and sponsoring the show. See you guys. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.